on your public school. So welcome to the series of your computer periods. So in this period, so today date is 1st June 2020. In the last video we have discussed till this point, that is USB port. So let's start from this point, that is PS2 port. So this is the picture of your PS2 port. PS2 port connector was developed by the company IBM in 1987. PS2 port is now considered of a legacy port it has been replaced by the USB port. पहले हम लोग ये यूज़ करते थे. Initially we used this port, but now there is a replacement. इसकी जगह हम लोग अब कौन सा पोर्ट यूज़ करते हैं? USB पोर्ट. Why we are using this port? It is used for attaching keyboard and mouse to a computer. After this we have a fireware. So this is the picture diagram of your fireware. It is also known as IEEE 1394. It was developed by the company Apple in 1994. It can transfer large amount of data and speed up to 800 Mbps, which is good speed. आप लोग डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो with a speed of 800 Mbps and connect up to different devices and connect up to 63 different devices. और आप 63 different devices को इसके साथ connect कर सकते हो. It is used to connect camcorders and video equipment to the computer. अगर आपको कंप्यूटर से कुछ कैमराज अटैच करने हैं for the video making, then you can use this fireware port. After this we have VGA. It's a video graphics array. It is similar to the serial port. So this is your serial port. It is very much similar with this port, but this serial port has pins where it has a connectors. यहाँ पे देखिए we have a holes here, but in this serial port we have a pins. यहाँ पे देखिए pins है, they are looks like each other, same लगते हैं, but there is a hole here, but there is a pins here. So after this, with the increase in use of digital video, VGA ports are gradually replaced by the HDMI. अब इसको किसने replace कर दिया? Your HDMI. हम लोग earlier we used this one, but now we use this. So it is called a high definition multimedia interface port. It is a digital connector that can carry high definition video and audio. It is also used to it can send audio to different formats. So it is a digital connector and carry high definition HD videos. The video which has a very high quality, बहुत अच्छी क्वालिटी के जो वीडियोस होते हैं वो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं? कैरी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं. Why we use this? It is used to connect high definition, ultra definition, HD और उससे भी अच्छा UHD devices like computer monitor, HD TVs, gaming consoles, हाई डेफिनेशन कैमरा एक्सेट्रा टू द कंप्यूटर. आप इन सब को इसकी हेल्प से कंप्यूटर से क्या कर सकते हो? कनेक्ट कर सकते हो. नाउ इट्स अ ईथरनेट पोर्ट. ईथरनेट पोर्ट RJ45 कनेक्टर लुक लाइक अ टेलीफोन RJ11 कनेक्टर. किसकी तरह लगता है? सो दिस इज़ योर ईथरनेट. ये किस लिए यूज़ होता है? टू connect your computer with internet. If you want a internet in your computer, what is wired network? And internet, अब दो तरह के नेट होते हैं. We have a wireless and wired. Wired means having a cable. अगर आपको केबल वाला इंटरनेट यूज़ करना है, then you can use this port which is called a RJ45 connector. After this we have a audio. These three holes are used for audio. This is line in that red line. It enables a user to connect an external audio device to the computer. अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कंप्यूटर से ऐड करना है, कुछ कनेक्ट करना है for the audio purpose, then you can use this line in red hole.
green is line out hole. It allows external speakers, headphones or output devices can be connected to your computer. Speakers attach करने हैं computer से, headphones attach करने हैं, you can use this connector. Mic port, that is this blue hole. It helps in plugging microphone into the computer. अगर आपको अपने computer में microphone attach करने हैं, that is why we are using this port. After that, so our next topic for today is external hardware. In the last video we have discussed the internal hardware, that is your motherboard, sound card, video card. All these are called the internal hardware that is installed inside your CPU cabinet, जो कि CPU के अंदर होते हैं, आप जिनको ना तो टच कर सकते हो, ठीक है, और it is very important after that to discuss external hardware that you can see and touch them. So the component which are attached to your computer externally are called external hardware components, are also called peripherals. क्या बोलते हैं? It is also called peripherals. It is divided into three categories: input devices, output devices and storage devices. So let us discuss one by one. Input devices, everybody knows that input devices are used to give data and instruction to the computer. कंप्यूटर के अंदर कुछ डेटा और इंस्ट्रक्शंस आपको देने हैं, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग इनपुट डिवाइसेस. वाई वी आर यूजिंग दिस डिवाइसेस? दीज डिवाइसेस convert the incoming data and instruction into a pattern of a binary codes. जैसे यहाँ से यूज़र ने कुछ डेटा दिया, किसके अंदर गया? कीबोर्ड के थ्रू अंदर गया. उस इंस्ट्रक्शन और डेटा को कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, तो उसमें चेंज करने के लिए वी आर यूजिंग दिस input devices and then supply the converted data to processor for processing, and after that you can give the converted data to the processor, that is your CPU, for the further processing. Now we have a keyboard, number one device. It is one of the most frequently used input device. That means why we are using this? To input data and instruction into the computer. So there are 5 keys available in the keyboard. Number one is typing key. These keys are alphabet keys, number keys, punctuation keys, shift key, caps lock key, spacebar key, backspace key. These are all called टाइपिंग कीज़. कंट्रोल कीज़ आर इधर आप इनको अकेले में भी यूज़ कर सकते हो और किसी दूसरी की कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल कंट्रोल, ऑल्ट, विंडो लोगो की, एस्केप की आर फॉर some of the examples of your control key. After this, the function keys. Function keys are from F1 to F12. If you remember, in your keyboard there is a line at the above of your keyboard from F11 to F12, so that are called your function keys. These keys have different functions in different programs. तो हर प्रोग्राम के लिए इसका कुछ अलग ही फंक्शन है. नेक्स्ट नेविगेशन की. नेविगेशन का मतलब है टू मूव. इफ़ यू वांट टू मूव, अब सपोज दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट, आपको कर्सर ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, on the left you want to go, on the right you want to go, so that is called the navigation. And who helps you in navigation? That is, some of the keys are available, that is arrow keys, home and page up, page down, delete and insert keys. After this we have a numeric keys. Numeric keys are the number keys from 0 to 9. It is on the right side of the keyboard for entering numbers at a faster pace. बहुत जल्दी नंबर्स को ऐड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. आफ्टर कीबोर्ड वी हैव अ माउस. माउस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इनपुट डिवाइस. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ इनपुट एंड अ पॉइंटिंग डिवाइस. वाई? बिकॉज इट इज़ लाइक इट इज़ यूज टू पॉइंट थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर. अब यहाँ पे एक फोल्डर है कंप्यूटर में. दिस इज़ योर कंप्यूटर एंड हेयर इज़ अ फोल्डर. सो लेट मी सपोज दिस इज़ योर, आपको उसको सिलेक्ट करना है. तो यू कैन गो
थ्रू माउस, आप उसको माउस की हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हो. सो देर आर 2 buttons अवेलेबल ऑन द माउस, लेफ्ट माउस एंड राइट माउस बटन. लेफ्ट माउस is the most frequently used, then your right. A single left click select an item while double click open an item. सिंगल क्लिक से क्या होता है, फोल्डर सिलेक्ट होता है, डबल क्लिकिंग करने से ओपन हो जाता है. राइट क्लिकिंग, it displays a list of commands on the screen. So one more function of a keyboard is there is dragging and dropping. किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह, suppose there is a thing here, आप उसको यहाँ लेके आना चाहते हो, you want to drag it, ठीक है, तो this would also be done with the help of mouse. So after that we have a type of mouse, mechanical mouse. Mechanical mouse is, there is a rubber or metal ball on its lower side that can roll in all the directions. So this is your mechanical mouse. So this is your scroll. Okay, so after this optomechanical mouse. Opto means optical, so this is your optical. So here is the sensors, optical sensors to detect the movement of the ball. In this one, previous one, we have a mechanical sensors. Clear? Next we have a optical mouse. So there is doesn't have any mechanical or moving parts. So why we are using this technology to detect the movement of the mouse, and optical mouse is more efficient, expensive than these two above mouses. Here you see there is no cable. देखो, it has no cable. So after this we have a scanner. Scanner is also an input device that scan text, images and object optically. The scanned data is then converted into a digital image and display on the computer. आप लोगों को क्या करते हो, स्कैन, इफ़ यू वांट, आपके हाथ में एक पेपर है, आप चाहते हो कि वो पेपर कंप्यूटर के अंदर हो जाए, चला जाए, तो विच डिवाइस हेल्प यू, दैट इज़ योर स्कैनर. उसको किस में चेंज करता है, इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल. वो पेपर एज इट इज़ आपको कंप्यूटर के अंदर भी दिखेगा. फॉर दैट पर्पज यू विल यूज़ स्कैनर. सो देर आर 3 types of scanner: ड्रम, फ्लैटबेड एंड handheld. So this is your drum scanner. Drum scanner में this is just look at this, एक रोल है यहाँ पर, ठीक है. The drum scanner has a drum glass drum to scan. In drum scanner, the light from object that is to be scanned is split into separate. तो एक लाइट होती है, जब वो इसके अंदर जाती है तो 3 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाती है. नंबर 1 लाइट इज रेड, ब्लू एंड ग्रीन. मेक द इमेज प्रिसाइज, और इमेज को बहुत छोटा कर देती है. प्रिसाइज मीन किसी चीज़ को छोटा कर देना. सो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड अ PMT टेक्नोलॉजी, दैट इज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. सो द ड्रम स्कैनर आर मेनली यूज्ड इन द पब्लिशिंग कंपनी and print high quality picture. So after that we have a flatbed scanner. This has a flat surface, so that is why it is called a flatbed scanner. It is one of the most popular desktop scanner. It looks like a miniature टाइपराइटर. किसकी तरह लग रहा है, एक प्रिंटर की तरह लग रहा है, मिनिएचर प्रिंटर विद अ फ्लिप up convert projecting the glass window. In flatbed scanner the object to be scanned, आपको जो भी चीज़ स्कैन करनी है आप उसके ऊपर रख देते हो, and just you have to close the lid, और उसका lid close कर देते हो. Which technology we will use in this, that is CCD, charge coupled device. In this we use PMT, photo multiplier tube. So after this technology is used to read the entire area. जो भी उस पेज, पेपर और नोटबुक पे होगा उसका सारा रीड करेगा. एंड आफ्टर दिस, डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज, flatbed scanner can fit standard and legal size document. Its flexible cover allow you to scan. आप क्या कर सकते हो, बुक्स, न्यूज़पेपर, फोटोग्राफ्स, कुछ भी स्कैन कर सकते हो. where we use this in schools, homes and medium sized offices. After that, handheld scanner. Handheld scanner is this your which, देखिए आप इसको अपने हैंड्स में कैरी कर सकते हो. ओके, इट ड्रैग ओवर द सर्फेस ऑफ द इमेज टू बी स्कैन. जिसको करना है आप सिर्फ उसको ऐसे पकड़ के, यू हैव टू जस्ट स्कैन लाइक दिस.
ठीक है. These scanners are operated by a hand. It is difficult to operate these scanner as they need a steady hand to scan objects in order to avoid distorted images. आपको बहुत ही efficiently उसको पकड़ना पड़ता है, बहुत ही steady होना. इतना सा भी जब आप move करते हो उसको तो वो पिक्चर क्या हो जाती है, distorted. तो it is very important to handle it carefully. So barcode scanner is one of the most utilized handheld scanner used in the shopping mall. So basically they are used in a shopping mall. So class, this is all about today's period. In the next period we will discuss some remaining topics of this chapter. Till then, take care, bye, and have a nice day.